हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आज मैं आ गया हूँ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग DIY वीडियो के साथ विच इज़ वी आर गोइंग टू इंस्टॉल बाई LED प्रोजेक्टर ऑन टू फोर्ड इकोस्पोर्ट पे बाई LED प्रोजेक्टर इंस्टॉल करने वाले हैं। फर्स्ट स्टेप बहुत ईजी सा है, बम्पर के बोल्ट्स एंड पुश पिन्स निकालने हैं। मैं पॉइंट कर रहा हूँ अपने फिंगर से, मैंने ऑलरेडी निकाल लिया है। और हेडलैम्प सिर्फ माउंटेड होता है 2 बोल्ट से, जो मैंने ऑलरेडी निकाल लिया है। नीचे का जो माउंट है वो बाहर खींचते टाइम टूट गया था, ध्यान रखिए। इफ़ यू पुल इट टू हार्ड इट्स गोइंग टू ब्रेक, इट्स अ लिटिल फ्रेजाइल, सो मेक श्योर यू डोंट पुल इट वेरी हार्ड while trying to remove the headlamp. That is the first step. The headlamps are out of the car. This is what the headlamps look like in their original state. एक बात ध्यान रखिए, हेडलैम्प का जो ओवरऑल लुक है वो चेंज हम नहीं करने वाले हैं। देयर विल बी नो फ्लैशी मॉडिफिकेशंस टू दिस हेडलैम्प। सो दिस इज द प्रोजेक्टर एंड इट इज़ अ लो बीम प्रोजेक्टर। ये सिर्फ लो बीम पे काम करता है। पहले इसको निकालना है, विच इज़ द फर्स्ट स्टेप। वी रिमूव द एग्जिस्टिंग प्रोजेक्टर विच इज़ अ हैलोजन प्रोजेक्टर एंड इट इज़ अ सिंगल बीम प्रोजेक्टर विच मीन्स इट ओनली ऑपरेट्स इन द लो बीम. It's mounted by 4 screws. We are going to undo the 4 screws using a Phillips screwdriver. Phillips screwdriver या फिर प्लस हेड screwdriver से हम 4 bolts या 4 screws को पहले निकाल लेंगे और उससे जो प्रोजेक्टर है वो आ जाएगा बाहर. So ये आ गया हमारा प्रोजेक्टर बाहर. The projector is out. There are only 2 terminals to it because it's a single filament bulb. It's a low beam bulb, low beam projector out from the headlamp assembly. ये आ गया बाहर. इसे made in China लिखा हुआ था, so it's probably from a Chinese origin. And this is the projector on the right hand side, black colored AES Turbo SE that we are going to use to replace the existing projector. हम लोग AES कंपनी का बाई LED प्रोजेक्टर यूज़ करने वाले हैं existing halogen single beam प्रोजेक्टर को replace करने के लिए. तो मैंने क्या किया, मैंने प्रोजेक्टर का ही जो एग्जिस्टिंग प्रोजेक्टर था उसी का एक प्लेट बाहर निकाल लिया और उसी को कट करके इसका जो फ्रेम है उसको डिज़ाइन कर लिया. बड़ा सिंपल सा मैंने काम किया है यहाँ पे. इस माइल्ड स्टील को मैंने टैप करके उसमें होल्स कर लिए और इस तरीके से मैंने बना लिया उसका फ्रेम. दिस इज़ व्हाट द फ्रेम लुक्स लाइक. आई हैव टैप्ड एंड ड्रिल्ड होल्स एंड आई यूज़ द कटिंग टूल टू cut out these shapes to make the mounts for this new projector, which comes with a cooling fan as well, and it's a bi LED projector with 2 laser pods. The links to the projector will be in the video description, or you can alternatively ping me on my Instagram handle. Behind the scene मैंने थोड़ा बहुत adjustment किया है to make it aligned. Behind the scene I have made certain adjustments to make it aligned properly, parallel to the ground and not axially incorrect, which is a very important step. हर इंस्टॉलेशन प्रोजेक्ट में मैं ये बात बोलता हूँ, जो प्रोजेक्टेड इंस्टॉलेशन है उसमें अलाइनमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है. अब दूसरे तरफ को भी मैं दिखा देता हूँ. दिस इज़ व्हाट द फ्रेम लुक्स लाइक. दिस इज़ एग्जैक्टली हाउ आई हैव इंस्टॉल द फर्स्ट वन एंड दिस इज़ गोइंग टू बी द सेकेंड वन. तो ऐसा कुछ इंस्टॉलेशन होने वाला है. लगने के बाद मैंने उसका जो श्राउड था सिल्वर कलर का, जो आप देख सकते हो स्क्रीन पे, उसे भी लगा दिया है. ब्यूटाइल ग्लू यूज़ किया है ताकि वो जगह पे लगे रहे. इट्स नॉट एग्जैक्टली अ डायरेक्ट फिट बट द ब्यूटाइल ग्लू डिड द जॉब. Once that was done, we sealed back the lens onto the assembly or the housing using butyl glue. Butyl glue is reusable. गर्म करने से पिघल जाता है और ठंडा होने से harden up हो जाता है. The wiring is sorted behind the projector. There is ample space out there. 2 lines मैंने high beam से भी pick किया था. I have picked up 2 lines from the high beam which will actuate the solenoid and the laser of the projector, which is an important step that I've already done behind the scenes. I've not shown it. And now this is what it looks like on the car. Perfect projection, perfect alignment. This takes some time to align properly onto the wall, and soon I'll show you what it looks like on the wall or as an output, what it looks like. कैसा दिखता है ये प्रोजेक्टर, कैसी है इसकी आउटपुट, वो मैं आपको नेक्स्ट क्लिप्स में दिखाता हूँ. Alright, so this is our car and right now what I'm doing is I'm using the flash button where both the high beam of the elliptical reflector plus the projector's high beam plus the lasers are being fired, and now we'll switch to low beam. लो बीम में बिल्कुल प्रॉपर कट ऑफ होता है, आँख पे बिल्कुल लाइट नहीं लगती है. इट्स वेरी वेरी यूजफुल इन द सिटी एंड ऑल्सो इन द हाईवे टू नॉट ब्लाइंड द ऑनकमिंग ट्रैफिक, विच इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग टू बी केप्ट इन माइंड.
So ये close-up shot है. This is the close-up shot of the projector. You can see it's in the low beam mode right now. And the moment I switch the high beam, the projector's high beam comes on along with the lasers. The lasers are the 2 pods on the top. Plus there is an inbuilt high beam solenoid like any other projector. It's a bi-LED laser projector on the 4D COSPOT, and you can see what a marvelous performance this provides, and it also looks great. So this is the performance. This is what it looks like in reality. मैंने इसको edit नहीं किया है, इस पे कोई extra editing यूज़ नहीं किया है इसको ब्राइट दिखाने के लिए. ये उसका रियल आउटपुट है. ऐसा दिखने वाला है आपका प्रोजेक्टर, ऐसी आउटपुट रहने वाली है. यू कैन ऑल्सो ऑब्जर्व दैट द लाइट is evenly spread even when the car moves, and there is a proper cutoff. The way we have installed it, the way we have aligned it, it all adds up and makes it look that much better. With this we come to the end of this video. I hope you have liked the video and you have learned something new. अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़रूर लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कीजिए. अगर आप चैनल पे नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, और अगर पुराने हैं तो कमेंट करके बताइएगा कैसे लगा आपको वीडियो, क्या अच्छा लगा, क्या बुरा लगा, क्या चेंजेस चाहिए आपको वीडियो में. थैंक्स अगेन फॉर वॉचिंग. हैव अ नाइस डे.